Hello everyone, myself Sumit. I welcome you to this video. Today in this video, we shall be dealing with Marigold textbook in English for class 5th students, and we'll take the lesson from unit 1 and chapter 1. And let us see the story we are going to see in this video. That will be from the unit 1 and the chapter 1 of this lesson for class 5th students. And the title of the lesson is Wonderful Waste. My dear students, wonderful waste, when these words you may be listening or when you read the title of this lesson, you must be wondering about things, okay? Here we come across the word waste. Waste is, what is that waste? Waste is the things which are not useful, okay? The things which we throw them away because they are not being used or we cannot use them again. But in this story, we shall be dealing with this kind of waste. That waste is used and that waste become one of the famous thing in the state of Kerala. Before that, let me tell you some of the things, okay? Now, you must be looking at your surrounding. You might have seen in your surrounding some of the things which we throw them, considering them a waste, okay? Like water bottle, when we drink the water from the bottle and water is getting over, and when water finishes, then we just throw the bottle away. And you might have observed also some people collecting that water bottle, okay? Simply they collect that water bottle and they sell them, okay? And you may be wondering why these people are collecting that water bottle and selling them, okay? Because that particular water bottle, which has been considered by us a waste, can be used again, okay? Through the process of recycling, okay? Then again, when you read the news, okay, you might have seen newspaper, okay, when you read the news, after reading the news, you just throw that newspaper or you just keep that newspaper at the house. Yes or no? So most of the time that newspaper also considered waste, but most of the time it is useful for the shopkeepers, okay. If we give that newspaper to the shopkeepers may use that one for giving things to the customers. Yes or no? Have you observed these things? And there are many more waste. That waste which we consider at the beginning, but that particular waste can be useful and they can be used in our day-to-day life. So, in this lesson, we shall be dealing with a story, similar story, as I am telling you the waste things. Okay, here this story is all about a state ऑफ केरला, ओके? ये एक केरला स्टेट के बारे में हम ज्यादातर बात करेंगे इस स्टोरी में, और उसी स्टेट में ये एक घटना हुआ था, एक इंसिडेंट है, ये एक स्टोरी है, और कैसे एक वेस्ट को उन्होंने यूजफुल किया या फिर वही वेस्ट को उन्होंने इस्तेमाल किया और वही वेस्ट एक शानदार चीज बन जाता है, एक फेमस हो जाता है अपने स्टेट में. सो लेट अस सी दिस वन इन आवर लेसन. So here is the lesson we will deal with. Wonderful waste. Before we begin this story, this is a story, okay? This is a story from Kerala state, as I told you in the beginning, okay? Let us see some of the things before we begin this one, okay? Waste can be quite useful. Waste can be quite useful. जिस चीज को हम वेस्ट मानते हैं, वही चीज हमारा बहुत उपयोग में आ सकते हैं या फिर बहुत यूजफुल हो सकते हैं, ओके? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला आपको, ये वाटर बॉटल का इस्तेमाल, ओके, जो वेस्ट माना जाता है उसको फिर से रिसाइकलिंग किया जाता है और उससे अलग अलग चीजें बनाई जाते हैं. And again, one more example I was giving you in the beginning about a newspaper, okay? Newspaper also is useful, okay? Now, these are some of the examples, okay? And in your surroundings, you might have seen many more examples of similar kind. इस प्रकार का बहुत सारे examples आपको पता होगा. जैसे कि हम
ये जो वाटर होता है, ओके, ये जो वाटर होता है कुछ कुछ गंदे वाटर होते हैं या फिर डार्टी वाटर जो होता है, उस वाटर को भी हम क्या बोलते हैं कि ये वेस्ट वाटर है, डार्टी वाटर है, उसको इस्तेमाल मत करो। पर उसी वाटर को अगर हम खेती में डालेंगे तो वो एक यूजफुल हो सकता है। यस और नो? सो उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे ये स्टोरी में। सो ये स्टोरी में ऐसा है कि यहाँ पे एक राजा होता है और वो राजा अपने दरबार में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल का नियोजन करता है, एक फीस्ट का नियोजन करता है, ओके। एंड इन दैट फीस्ट ही इज inviting so many members, so many things in his state, okay. And there is a cook who is cooking the meal, preparing the meal for the dinner, okay. Now here dinner means what? We say the meals. Dinner is a meal which is taken in the evening. Lunch is what? Lunch is a meal which is taken in the afternoon. Breakfast is what? Breakfast is also a meal which is taken in the morning. So he had ordered a dinner, grand dinner in his palace, in his palace. Okay, and we see the cook is trying to make a special dish out of vegetable scraps. Out of vegetable scraps, the cook is making a item because the king is ordering him not to waste the vegetable scraps. या फिर vegetables का टुकड़े जो होते हैं vegetable काटने के बाद, वो टुकड़े को जिसको हम मानते हैं कि वेस्ट मानते हैं और उसको हम फेंक देते, तो वही टुकड़ों को किंग ने उसको ऑर्डर किया या फिर आदेश दिया कि अब ये जो वेजिटेबल का टुकड़े है जिसको आपने डस्टबिन में रखा हुआ है उसको आप वैसे ही फेंक नहीं सकते। तो क्या करने का उसको कि उसका कोई यूजफुल करना है, क्या उसको कुछ बनाना है पर उसको वेस्ट नहीं करना है। इस प्रकार का आदेश राजा ने देकर वहां से चले जाते हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो दिस इज ए फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन आई विल सी। ओके, नाउ we start the lesson reading here. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. Okay, once एक बार ऐसे होता है, once what happened? Maharaja of Travancore. Okay, this is all about, we are talking about a Kerala state. So in Kerala state there is a place, there is a city, that name is Travancore. So the Maharaja of Travancore, what did he do? He ordered a grand dinner in his पैलेस। एक डिनर या फिर एक भोजन का नियोजन उन्होंने किया अपने राज दरबार में। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। सो इन द आफ्टरनून व्हाट डिड ही डू? बिफोर द डिनर, okay, before the dinner when the guests have come they have to serve the food. So in order to take the food, in order to serve the food, okay, उन्होंने किधर गया? किचन में गया। किसने? राजा ने किचन को गया कि खाने में क्या क्या बन रहे हैं और कौन कौन सा आइटम्स बन रहे हैं अपना फीस्ट के लिए या फिर अपना भोजन के लिए, शाम का भोजन के लिए, वो सब देखने के लिए उन्होंने किचन को गया। ओके, what are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. Okay, now in the kitchen we have seen some of the activities are done. Okay, kitchen में किस प्रकार का एक्टिविटी किया जाता है? वहां पे खाना बनाना, सब्जियां काटना और बहुत अलग अलग चीजें, बर्तन घासना, ये सारी चीज यहाँ पे दिखाई देते हैं किचन में। और वो क्या करते हैं? कुक्स करते हैं या फिर अपने घर में अपने पेरेंट्स करते हैं, अपने मामी करते हैं। ओके, तो उसी तरह वो किचन में भी वहां का जो कुक थे, खाना बनाने वाले लोग थे, वो क्या किया? बहुत सारे सब्जी वगैरह काट के उन्होंने क्या किया? रेडी किया। और जितना वो सब्जी काटने के बाद उसका जो टुकड़े रहते, छोटे छोटे टुकड़े रहते जिसको हम फेंकते, उसको उन्होंने इकट्ठा करके ये कोने में रखा हुआ था। तो उसी को देखकर राजा ने यहाँ पे उनको पूछ रहा है या फिर सवाल कर रहा है कि आप यही टुकड़ों को या फिर ये वेजिटेबल्स टुकड़ों को क्या करने वाले हैं? ओके, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोस वेजिटेबल स्क्रैप्स? ही इज आस्किंग देम द क्वेश्चन, पॉइंटिंग एट द बास्केट ऑफ वेजिटेबल स्क्रैप्स। ओके,
The cook replied, "They are waste. We will throw them away." And the cook is replying. Cook is answering to the question of the king. What was the king's question? He asked that, "What are you going to do with the vegetable scrap?" So the cook is replying here, "They are all waste." वो सारे के सारे क्या है? Waste है. Okay? जिसको हम अभी क्या करेंगे? फेंक देंगे. They are all waste. We are going to throw them away. Okay, then let us see what the king is telling them. You cannot waste all these leaves and pieces of vegetables. Okay, find a way to use them. Okay, now Maharaja, what did the Maharaja tell? He tells that you cannot waste all these pieces of vegetables. Okay, ये वेजिटेबल्स का टुकड़ा, ये वेजिटेबल्स का स्क्रैप जिसको आपने बास्केट में रखे और कोने में जो रखा हुआ है और वो बोल रहे हैं कि फेंक देंगे. यू कैन नॉट वेस्ट दिस वेजिटेबल्स. उसी वेजिटेबल स्क्रैप्स को, वो वेजिटेबल्स टुकड़े को आप वेस्ट नहीं कर सकते. आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड अ वे. यू हैव टू फाइंड अ वे हाउ दैट वेजिटेबल स्क्रैप्स कैन बी used. Okay, you have to find a way it can be useful, or how we can use that vegetable scraps. Okay, the Maharaja commanded sternly and walked away, and telling that, okay, ordering them, Maharaja sternly ordered them. Okay, उनको आदेश देते हुए महाराजा वहां से क्या करता है? प्रस्थान कर लेते, वहां से walked away. Okay, he went away from the kitchen, telling them, you cannot waste these vegetable scraps. You have to find a way to use them. Okay, in the next video or in the part 2 video, we are going to see the rest of the lesson. Till then, bye, and meet you in the second part of the video.